आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के ऊपर मैं गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राहें हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आदि बहती रे, विदेशी दिलों को तू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। कथा उनका छोटा सा और सरपटे उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। This is Nischal of grade 7. Name of the song is Raghupati Raghava Rajaram.
Happy morning, teachers. I am Vivek Jain from grade 5. Today I am going to tell about Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi ji. He is father of our nation. We call him Bapu. Bapu was born at Porbandar in Gujarat. His full name is Mohandas Karamchand Gandhi. He was a freedom fighter and helped our country to get freedom from British rule. His contribution to freedom movement are Dandi March, Quit India movement and many more. His freedom struggle are purely based on non-violence. He used to wear only khadi clothes and had charkha to make khadi. He always insists on to use Swadeshi product. Our Prime Minister Shri Narendra Modi initiated a new mission on Bapu birthday, 2nd October as Swachh Bharat Abhiyan. We all should contribute to this initiative. Thank you. Jai Hind. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1869 ಜನಿಸಿದರು. ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಎಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಹಿಂಸೆ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹಿರಿದು. ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Happy morning everyone. I am Vyom. On this special day, I want to wish you Happy Gandhi Jayanti. On this special occasion, I want to give a small performance. Thank you. I'm Shraddha. I'm studying in 4th standard. The song's name is Raghupati Raghava Rajandra. Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitaram Ishwar Allah Tero Naam Sabko Sannadi De Bhagwan Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitaram Kaushalya Balaram Dashrath Ji ka pyara Ram Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitaram Patita Pavana Sitaram Patita Pavana Sitaram. Happy Gandhi Jayanti. Thank you. नमस्ते। गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सच्चाई का लेकर शस्त्र और अहिंसा का लेकर अस्त्र, गांधी ने अपना देश बचाया, गोरों को था दूर भगाया।
दुश्मन से भी प्यार किया, मानव पर उपकार किया। गांधी हम करते तुझे नमन, तुझे चढ़ाते प्रेम सुमन। चरखे के ताने बाने से भारत का इतिहास रचा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में एक विश्वास रचा। सहम गया विदेशी फिरंगी, लड़ने का अभ्यास रचा। मान गया अंग्रेजी शासक, बापू की पहचान को। हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी के बलिदान को। गांधी जयंती की शुभकामनाएं। धन्यवाद। And hi ma'am, I'm studying in grade 14 Presidi School. Today I'm going to speak about Mahatma Gandhi ji. October 2nd we are celebrating national festival. Mahatma Gandhi ji born on October 2nd 1869. He was a great freedom fighter who led India. He was a father of our nation. Through time, non-violence were his tool to fight against British. His way of fighting is satyagraha. He taught us to be honest and truthful. Thank you. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. This is quoted by Mahatma Gandhi. I'm Janvi Taparia from grade 10 and I'm going to tell a poem about a father of our nation. It was vacation and I had nothing to do. I was home and mummy daddy too. My glance caught a sketch of an old person. He appeared to be the gentlest under the sun. Strikingly different was the expression in his eyes. Suddenly I felt guilty of all my lies. His lips parted in a smile so pure. He left me spellbound, that's for sure. Who is he, Dad? Was my question. Come on, don't you know, was his reaction. He is the one who has set us free. He is the one who has planted the tree. He is the one who was bold enough, firm and stubborn but never rough. Truth and non-violence is what he taught. Same for the principles for which he fought. Preaching and practices for once were the same. His deeds were worth name and fame. I had never seen a soul so tall. Oh Dad, he appears to be the father of all. You said it, child, said my dad. Bapu is the name he always had. I saw the sketch again and again. His returning smile was my greatest gain. October 2nd was the day, my friends, that certainly changed my life's trends. A very happy Gandhi Jayanti to everybody. Thank you and have a nice day. Everyone, my name is Kirti and I am from 9th standard. It gives me immense pleasure to speak about this auspicious occasion. Gandhi Jayanti is celebrated every year to pay a tribute to Gandhiji and remember his great efforts for our country's independence. Mahatma Gandhi, who is also known as Father of our Nation, was born on 2nd October 1869 in a small city, Porbandar, Gujarat. Mahatma Gandhi always believed in non-violence. That's why his main aim was to build and create a new society which practices honesty and non-violence. 2nd October is also celebrated as International Non-Violence Day because he was the preacher of non-violence. We should always remember his rules like Ahimsa Parmo Dharma. We should always remember these great patriots who died for our country, for us. Gandhiji started the Satyagraha movement. Under his leadership, India got independence on 15th August 1947. India lost a great personality on 30th January 1948. I would like to end here with the beautiful lines said by Gandhiji. Don't lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. If the few drops of ocean are dirty, the ocean does not become dirty. Thank you. नमस्ते, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जयंती भारत में महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को वार्षिक रूप से मनाया जाता है। अपने जीवन को कष्टों को झेलने पर भी सत्य अहिंसा के पथ से विचलित न होकर शांति का उपदेश देने वाले महात्मा गांधी जी का परिचय देना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम श्री करमचंद उत्तमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से शादी कर ली।
गांधी जी कानून के छात्र थे और जब वे पढ़ने के लिए लंदन गए तब उन्होंने अपनी माता को प्रतिज्ञा की कि वे मांस मदिरा से दूर रहेंगे। आगे की पढ़ाई के लिए गांधी जी ने 23 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पर गांधी जी को अपनी त्वचा के रंग और विरासत के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा और उसका सामूहिक उत्तर देने के लिए नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उन्हें स्टेज कोच में यूरोपीय यात्रियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी गई। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर, जो गांधी जी के गुरु थे, गांधी जी सन 1915 में भारत लौट आए। उन्होंने एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी सिद्धांतकार और सामुदायिक आयोजक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ का प्रतिशोध और अहिंसा विरोध के कारण गांधी जी ने 79 साथी के साथ दांडी मार्च शुरुआत की। उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी के भारत की स्वतंत्रता में एक बड़ा योगदान है। 30 जनवरी सन 1948 को नई दिल्ली में एक बड़े हवेली बिरला हाउस, अब जिसे गांधी स्मृति कहते हैं, के परिसर में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी ने आखिरी बार हे राम कहा। राजघाट में गांधी जी के समाधि स्थल है। गांधी जी को प्यार से लोग बापू भी कहते हैं और 2 अक्टूबर में गांधी जयंती के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾಡಿನ ಧುರೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಮಿಗಿಲಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದವರು ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು 1869 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಪೋರ್ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ತೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ರಾಟಿ, ಹಿಡಿದವರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಕೋಲು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೋಲು, ಅಂಥವರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾತ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾತ, ಅಂಥವರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.